थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक, बिस्किट्स खा लेंगे थोड़ा सा, फिर जाएंगे वापस। पता नहीं ऊपर जाएंगे कि नहीं। आज तो जो राइड है वो राइड है देवकुंड वाटरफॉल। तो आज जाने वाले हम देवकुंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का राइड देवकुंड। हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए यहाँ पे और बहुत कड़क सीन है। रुचि दीदी, आप क्या बोलना चाहोगे? Hi guys, so this is the way to Devkund Waterfall. और सीन कैसा लग रहा है? सीन तो बहुत बढ़िया है। आप देखो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीनरी। बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम मस्त। बेस्ट प्लेस। आओ आप राइडिंग पे। I'll tell you a story before it tells itself. I'll lay out all my reasons. You say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong, but no one listens to me, so I put it in this song. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their hands at my neck this time, but you're the one that I want. If that's really so wrong, then they don't know what this feeling is like. And I say yeah, 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 yeah. And I say yeah, 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 yeah. I'll tell them a story, they'll sit and nod their heads. I'll tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions, and stand by what you said. In the end it's my decision, so it's my fault. Hey guys, so this place is Devkund. We are heading towards Devkund, but the roads are little rough, so please wear safety gears before coming here. So you can see this beautiful view. There are so many big and it's a huge mountains here. So the best time is to visit when it's raining. सामने पूरा पहाड़ दिख रहा है, एकदम मस्त। तो अभी हमको वो सामने वाला पहाड़ है और उधर भी एक पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है। उधर नहीं जाने के दूसरे जगह जाने के। I can't change the way things are, even though it feels wrong in my heart, even though it gives me to breathe this air. So guys, हम पहुंच गए अभी देवकुंड। यहाँ के पार्किंग्स, बाइक्स एंड कार्स देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। तो आफ्टर पुणे से
2.5 आवर्स का राइड करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे और अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, तो देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सफ़र, यहाँ से चलते हैं, अभी देखते हैं और कितना दूर है। When I'm driving through the night with no strength left inside, can I call you? Can I call you? When the radio don't play the song to ease my तो 10 मिनट का ट्रैक खत्म, 10 मिनट चलिए आता है से। हेलो हेलो, ये रास्ता है पीछे। तो आधे घंटे का चलने के बाद ऐसी हालत हो गई हमारी, रुक रुक के आना पड़ रहा है और बहुत बुरी हालत है। शॉर्ट ब्रेक, बिस्किट्स खा लेंगे थोड़ा सा, फिर जाएंगे वापस, पता नहीं ऊपर जाएंगे कि नहीं। रास्ते बहुत हार्ड है यहाँ के, एकदम पूरा पानी, हालत खराब हो गई है आदमी। wrong in my heart. When I'm driving through the night with no strength left inside, can I call you? Can I call you? When the radio don't play the song to ease my pain, can I call? सो ऑलमोस्ट 50% ट्रैक डन हो चुका है, चल के अभी ये हालत है, सो टाइम अभी और आधा चलना है। ये देखो पहाड़, हालत हमारी खराब हो चुकी है। और बहुत चलना है। तो यहाँ पे आने के बाद 2 रास्ता जाता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो हमको राइट साइड में जाना है। यहाँ पे एक पहाड़ होगा और यहाँ पे बोर्ड भी होगा, देवकुंड वाटरफॉल। सिक्सटी to 70% ट्रैक हो गया है। सो यहाँ पे एक ब्रिज है, 20 रुपीज़ पे करना होता है, देन आपको जाने मिलेगा ये रोड से, ब्रिज से, वरना नीचे वाला रास्ता है। ये ब्रिज है, ब्रिज से जाना है और आधे लोग जो है वो पानी से जा रहे हैं। और ये पुल भी ऐसा है जो कि इतना हिल रहा है, खतरों के खिलाड़ी वाला पुल है ये। After 3 hours of trek, we are here. Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that hurt. We don't need to understand here in Wonderland. La 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 la. We don't need to understand. Here in Wonderland. La 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 la. We don't need to understand. Here in Wonderland. We don't need to understand. Here in Wonderland. रिटर्न जा रहे,
और रिटर्न जाते वक्त अभी सिर्फ 3:30 हुए, बट आप क्लाइमेट देख सकते हो। अभी से यहाँ पे अंधेरा होना चालू है, अभी से यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग का सही टाइम मॉर्निंग ही होगा। And I say yeah, 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 yeah. And I say yeah, 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 yeah. My friends say no, सो गाइस, आते वक्त का वीडियो नहीं बन सका क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। हमने कुछ लोगों को पूछा, वहाँ के गांव वाले लोगों को, कि देवकुंड क्या है, देवकुंड नाम क्यों पड़ा। तो उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने में वहाँ पे 7 देवियों की पूजा होती थी, तो इसलिए वहाँ का नाम देवकुंड है, वो भगवान का प्लेस है। पुणे से जाने के लिए वहाँ पे 2.5 आवर्स लग गया आपको गाड़ी से, और वहाँ से जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज पहन के जाओ, और जो ट्रैकर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स है या फिर जो ट्रैकिंग करते हैं, उनके लिए ये ट्रैक जो है वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का हो सकता है। बट जो नॉन ट्रैकर है, जो कभी ट्रैक नहीं करते हैं, बहुत कम जाते हैं ट्रैकिंग को, तो उनके लिए शायद से 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो मैं विदाउट शूज गया था, तो मुझे तो 3.5 घंटे लग गए ऊपर जाते हुए, और नीचे आते हुए 2.5 आवर्स लग गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।